Past perfect tense. What is the past perfect tense? For example, if I talk about this major definition, so I can say it shows any action which was completed in past but before any specific time. We hardly use past perfect in our routine. Most of the time we use past simple tense, like मैंने देखा, उसने खाया, मैं गया, मैंने उससे बात की, वगैरह वगैरह. But whenever we have any specific time to mention in our past, so there we have to use past perfect tense. For example, if I say मैंने 6 बजे से पहले अपना काम कर लिया था, so I had done my work before 6 o'clock, because there is involvement of some sort of time, then we have to use past perfect tense. And now if I talk about its major identity, its identity in Urdu would be like चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ले लिया था, दे दिया था. As I told you, 6 बजे से पहले ही कर लिया था, मैं तो सो गया था. It means though he is not saying or he is not telling you any specific time, but it means वो सो गया था शाम से पहले, रात से पहले, 9 बजे से पहले. So there is some sort of time which is hidden, yet it is past perfect tense. सो गया था, he is not saying वो सोया. अगर वो कहता है कि वो सोया, then it is past indefinite. But if he says like in this way, मैं तो सो गया था, so you will have to understand that this is your past perfect tense. Helping verb would be had, and we will use third form of verb with obviously both of the helping verb, singular and plural, with both we will use had. Now there is an example, मैंने काम कर लिया था, though he is not mentioning any time. You can see there is no time mentioned here. Like मैंने काम कर लिया था, I haven't written like 6 बजे से पहले, शाम से पहले, रात से पहले, yet it is your past perfect tense. Because आप ज़रा गौर करें, मैंने काम कर लिया था, दो वो बोल नहीं रहा कि कोई टाइम है, येट मतलब 6 बजे से पहले कर लिया था, शाम से पहले कर लिया था, रात से. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टाइम, मैंने काम कर लिया था, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड आई हैड डन माई वर्क, दिस इज योर ऑब्वियसली सब्जेक्ट, एंड यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद योर ऑब्जेक्ट. आई हैड डन माई वर्क, हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब. One more thing which is very important, as I told you that in past perfect tense, most of the time we have some sort of time mentioned, like when you have performed your action in your past before any specific time, जो माजी में किसी खास वक्त से पहले कर लिया था. There we have a combination of two tenses. One is your past perfect plus past indefinite. आपको वो मशहूर एग्जाम्पल याद होगी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. सेम इज़ द केस हेयर, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था. यू विल हैव दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, यू माइट कम अक्रॉस दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर पास्ट परफेक्ट. 6 बजे से पहले वो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, वो सो गया था, ऐसे ही मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था. वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन, सो रिमेंबर दिस थिंग or keep this thing in your mind, that you will have to use past perfect. You will have to report your past perfect tense first, and then the second tense would be your past simple, which is past indefinite. For example, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, so you will translate this one first. He had gone, this is your past perfect, and second portion, as I told you, this would be your past indefinite. मेरे पहुंचने से पहले, before I arrived, this is your past indefinite. So here this structure or this combination is really important. Keep this thing in your mind. In past perfect you will have a combination of past perfect plus past indefinite. कोई काम मेरे जाने से पहले वो सो चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पाकिस्तान के मैच जीतने से पहले इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था. सो दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल, रिमेंबर दैट योर फर्स्ट tense would be your past perfect, second would be your past simple. So this is your past perfect tense which I defined, and hopefully you must have got some sort of idea about it. I have tried really hard to make it very easy for the basic learners. Let's see what happens. So if you liked my lecture, don't forget to subscribe my YouTube channel, and if you like my way of teaching, then you may call me and you may take your online classes from me, having paid a reasonable fee. Thank you very much.